Assalamu alaikum and welcome to Dr. Imran's official, and into the lecture we will discuss the muscles of spine, the muscles of spinal cord, and into the lecture we will discuss the function and location of these muscles. And initially if we discuss the spinal region, so our spine is divided into three main parts. The first part is called cervical part, and in cervical part there are seven vertebrae that are called cervical vertebrae, and the cervical vertebrae are located in cervical region, and there are seven vertebrae which we can consider C1, C2, C3, C4, C5, C6, and C7. So the muscles located here at cervical regions are the basically muscles of cervical region. And the second basic important part is called thoracic part. So the thoracic part starts from thoracic vertebra T1 and it goes to thoracic vertebra T12. So T1, T2, T3, T4, T5, and so on T12. These vertebrae, the muscles are located on these vertebrae are called thoracic muscles. And the third one portion is called lumbar vertebra. And lumbar vertebra, there are five main vertebrae that we can say L1, L2, L3, L4, and L5. And the muscles located on these vertebrae are called basically lumbar muscles. So here we will discuss each and every muscle, their location of each muscle, and the function of each muscle. So if initially we will discuss the first muscle that is called semispinalis capitus muscle. Semispinalis capitus muscle is the basic muscle of neck, and it is basically located onto the both side of your neck. And the basic function of semispinalis muscle is basically it extend and help to bend your neck. When you extend your neck and when you bend your neck like seeing up to the roof, so this movement is basically by the semispinalis muscle. The second muscle, which is located basically in the last of cervical region, this is called longissimus capitus muscle. So the longissimus capitus muscle is the basically longest muscle of neck, and the basic function of longissimus muscle is that it rotates your neck. When you rotate your neck clockwise or either anti-clockwise, so both these kind of movements are done by longissimus capitus muscle. The third muscle is called Longissimus Cervicis muscle. Longissimus Cervicis muscle is located on both sides of your spine, and basically Longissimus Cervicis muscles are basically located on the cervical region of the both spinal cord area, and basically we consider this muscle is as an accessory respiratory muscle because it helps in respiration. The next muscle is called semispinalis thoracic muscle, which is located onto the thoracic vertebra, and the basic function of semispinalis thoracic muscle is that it helps to flex and rotate your thoracic region. And this one is the thoracic region. When you extend and when you rotate like just on your chest, so this flexion and this rotational movement is done by semispinalis thoracic muscle. The fifth muscle is called multifidus muscle. Multifidus muscle is the longest muscle that starts from your neck and ends at your pelvic area, and this is the longest muscle. And when this muscle comes to this region in lower back region, then it expands. And the basic function of multifidus muscle is that it stabilizes your low back area, and if this muscle weakens then it causes low back pain.
After this side, we should come this side, and this side, first muscle is called this first muscle is called Splenius Capitus muscle. So Splenius Capitus muscle is basically a deep muscle of neck, and basically it attaches to the knuckle and spinous of seventh cervical vertebra and third thoracic vertebra. Basically, it starts from the seventh cervical vertebra and then it comes to end third thoracic vertebra. So it from seventh cervical to third thoracic region. The basic function of the splenius muscle is that it flex and rotate your neck. Then next muscle comes Iliocostalis Cervicis muscle. Iliocostalis Cervicis muscle is basically located in your cervical region, and the basic function of Iliocostalis muscle is that it erect your spine. When you erect your spine, and basically it stabilizes your spine. So there are two functions of iliocostalis muscle. That first function is that it erects your spine, and the second function of iliocostalis muscle is that it stabilizes your spine. The next muscle is called Iliocostalis thoracic muscle. Iliocostalis, this was Iliocostalis cervicis muscle, which basically located on your cervical region. And this one muscle is called Iliocostalis thoracic muscle, which is located onto your thoracic region. And the basic function of Iliocostalis thoracic muscle is that it basically helps to extend your thoracic region, basically helps in extension activities of thoracic region. The next muscle is called spinalis thoracic muscle, which is also located on the thoracic region of your spine. And the basic function of spinalis thoracic muscle is that it helps to flex your spine laterally, and it rotates your spine. When you basically flex laterally and when you rotate your spine clockwise, anti-clockwise, both these movements are specially occurred by this muscle, which is called spinalis thoracic muscle. The next muscle is called Longissimus thoracic muscle. Longissimus thoracic muscle is also located in the thoracic region of spine, and the basic function is its basic attachment is onto the 12 thoracic vertebra. It is basically attached in T12, the thoracic vertebra T12. The basic function of longissimus thoracic muscle is that it basically erect and flex your spine. The last muscle is called iliocostalis lumborum muscle. Iliocostalis lumborum muscle is just located on to your lumbar spine, and it is the basically erector muscle of your spine. And the basic function of iliocostalis lumborum muscle is that it basically allows free movement of your spine. When you move your spine left, right, upward, downward, every kind of movement is done by this muscle, that is called iliocostalis lumborum muscle. So we have discussed these muscles in detail. I will repeat this once again. Initially, we have discussed semispinalis muscle, semispinalis capitus muscle, which is located onto the both side of your neck throughout the spine. And the basic function of semispinalis muscle is that it helps your neck to extend and bend your neck to backward. The second muscle we have discussed, that is longissimus capitus muscle. Longissimus capital muscle is the longest muscle located in your neck region, and basic function of longissimus capital is that it helps to rotate your neck. The next muscle is called Longissimus Cervicis muscle, and the Longissimus Cervicis muscles are located onto the either side of spine in your cervical region. And the basic function of this muscle is that it helps
in your respiration, and it is considered as respiratory accessory muscle. After longissimus cervicis muscle, then comes semispinalis thoracic muscle. Semispinalis thoracic muscle is also located in thoracic region of your spine, and the basic function of semispinalis thoracic muscle is that it basically flex and rotate your thoracic region. Then the last muscle on this side is called multifidus muscle. Multifidus muscle is basically starts from your neck and it ends at your iliolumbar area. And the basic function of multifidus, and in this area it grows much better as compared to upper one. So basically it is developed in most in this area, lumbar area. So the basic function of multifidus muscle is that it basically stabilizes your low back area, and if multifidus muscle weakens, then definitely it can cause low back pain. Then we come Splenius Capitus muscle. Splenius Capitus muscle is just located in the depth, in the deeper part of your neck, and the basically it attaches to the seventh cervical and third thoracic vertebra. And the basic function of splenius muscle is that it helps to flex and rotate your neck. After this comes Iliocostalis Cervicis muscle. Iliocostalis Cervicis muscle is basically attached to your cervical area of your spine, and the basic function of Iliocostalis Cervicis muscle is that it erects your spine and it basically stabilizes your spine. Then we will discuss Iliocostalis thoracic muscle. Iliocostalis thoracic muscles are located onto the thoracic region of your spine, and the basic function of Iliocostalis thoracic muscle is that it helps to extend your thoracic spine. Then comes spinalis thoracic muscle. Spinalis thoracic muscle is basically located on the thoracic region, and it helps to rotate your spine, thoracic spine, and it helps to flex your lateral spine to lateral side. Then comes second large muscle, longissimus thoracic muscle. Longissimus thoracic muscle is also located on the lower area of your thoracic spine, and basically it attaches to the 12th vertebra of your thoracic region, T12. And the basic function of longissimus thoracic muscle is that it helps to erect and flex your spine. Then the last muscle we have discussed is basically called Iliocostalis lumborum muscle. Iliocostalis lumborum muscle is located onto the just or lumbar side of your spine, and basically it is one of most important erector muscle of spine. And the basic function of lumborum muscle is that it helps your low back area to move freely on every kind of angle. So all these we have discussed in today's lecture. Now I will repeat this lecture in Urdu for our local students. अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो बेसिकली लेक्चर है ये हमारा जो लंबा बेसिकली जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर जो बेसिकली बैक साइड का जो एरिया है कमर का, उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉलम जो पाई जाती है उसके ऊपर जो बेसिकली मसल्स पाए जाते हैं उसके हम बेसिकली आज फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, उनकी लोकेशंस को डिस्कस करेंगे। और बेसिकली अगर हम देखा जाए स्पाइनल कॉर्ड को, तो उसको हम बेसिकली बड़े जो मेजर पार्ट्स हैं 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो बेसिकली सर्वाइकल पार्ट कहलाता है, और जिसको हम गर्दन का एरिया भी कह सकते हैं। और जो सर्वाइकल पार्ट है उसमें बेसिकली 7 वर्टिब्रा होते हैं, 7 मोरे होते हैं, जिसको हम C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 कहते हैं। अब जो मसल्स यहाँ पे सर्वाइकल रीजन में बेसिकली लोकेट होंगे
वो ज़ाहिर बात है सर्वाइकल एरिया की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। फिर इसके बाद जो सेकंड पार्ट आ जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम थोरेसिक रीजन कहते हैं। बेसिकली आपका जो थोरैक्स का एरिया है, जैसे आपके पास सिंपल वर्ड्स में इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, 12 पसलियां हैं हमारी, तो इसी तरह हर पसली की बैक साइड पे जो है ना आपका थोरेसिक वर्टिब्रा आ जाता है, जिसको वो भी 12 है। तो बेसिकली हम थोरेसिक जो वर्टिब्रा है उसको T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 और T12, 12 मोरे हैं तो उसको हम T12 कहेंगे, T1 to T12। ये बेसिकली थोरेसिक वर्टिब्रा है। अब जो इन वर्टिब्रा के ऊपर जो बेसिकली मसल्स आ रहे हैं उसको हम थोरेसिक मसल्स कंसिडर करते हैं, और उनका फंक्शन जो है बेसिकली थोरेसिक एरिया को स्टेबलाइज करना है। फिर इसी तरह अगर हम निचला एरिया देख लें, ये जो एरिया है जहाँ पे मैंने इस वक्त किया हुआ है, ये लंबर एरिया है, यानी कि ये बेसिकली लो बैक एरिया हमारा होता है, जो कमर का मेन पार्ट होता है वो होता है। और बेसिकली जो हमारा लो बैक एरिया है, कमर का जो हिस्सा है, ये बेसिक पार्ट है हमारा, जो हमारी बॉडी का जो पूरा वेट है वो इसको बर्दाश्त करता है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए कमर के पास तो हमारे 5 मोरे हैं, जिसको हम L1 to L5 कंसिडर करते हैं, यानी बेसिकली जो लंबर वर्टिब्रा है उसमें L1, L2, L3, L4 और L5, ये 5 वर्टिब्रा हैं। अब इन वर्टिब्रा के ऊपर जो मसल आएंगे उनको हम लंबूरम मसल कह सकते हैं या इरेक्टर स्पाइनी मसल्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली आज के इस टॉपिक में हम जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, बेसिकली जो कमर का एरिया सारा, उसमें जो मसल्स वाक़ हैं उनके नाम पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन पढ़ेंगे, और आखिर में उसके जो बेसिकली फंक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अब हम अपने लेक्चर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने समझा दिया आपको कि सबसे ऊपर जो पार्ट है ये हमारा गर्दन का पार्ट है, जिसको हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं। अब सर्वाइकल रीजन में जो सबसे पहला मसल पाया जाता है, सेमीस्पाइनलिस मसल पाया जाता है, सेमीस्पाइनलिस कैपिटस मसल इसको कहते हैं। अब सेमीस्पाइनलिस कैपिटस मसल जो है ये बेसिकली गर्दन के दोनों साइड पे पाया जाता है, और जो बेसिक फंक्शन है इसका नेक की एक्सटेंशन है, यानी कि नेक को ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये मूवमेंट इसकी वजह से है। और सेकेंडली अगर नेक को बेंड करेंगे, बेसिकली बेंडिंग करेंगे नेक की, तो वो जी बेसिकली वो भी मूवमेंट जो है वो बेसिकली सेमीस्पाइनलिस कैपिटस मसल की वजह से आएगी। फिर सेकंड जो मसल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ये बेसिकली इसको हम लॉन्जिस्मस कैपिटस मसल कहते हैं। लॉन्जिस्मस कैपिटल मसल जो है ये नेक का एक वन ऑफ लार्जेस्ट मसल है, यानी कि गर्दन का एक बड़े मसल्स में कंसिडर किया जाता है लॉन्जिस्मस कैपिटस को। अब लॉन्जिस्मस कैपिटस जो है इसका जो बेसिक फंक्शन है, ये क्या करता है, आपका जो हेड है उसको रोटेट करने में हेल्प आउट करता है। बेसिकली आप हेड को अगर रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो ये जो सारी मूवमेंट है आपकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑफ हेड, तो ये बेसिकली लॉन्जिस्मस कैपिटस मसल की वजह से आएगी। अब लॉन्जिस्मस कैपिटस मसल के बाद हमारे पास लॉन्जिस्मस सर्विसेज मसल आता है। अब जो लॉन्जिस्मस सर्विसेज मसल है, नाम से जाहिर है ये हमारा जो बेसिकली सर्वाइकल रीजन है उसी में लोकेट होता है, जो गर्दन के एरिया से थोड़ा सा निचले पार्ट पे होता है। और बेसिकली जो सर्विसेज एरिया है इस ये बेसिकली बोथ साइड पे, यानी कि स्पाइन के इस साइड पे भी और इस साइड पे भी पाया जाता है। और बेसिकली जो लॉन्जिस्मस सर्विसेज मसल है इसको हम रेस्पिरेटरी एक्सेसरी मसल भी कंसिडर किया जाता है। और बेसिकली ये है कि ये आपके जो बैक साइड पे एरिया जो है उसमें इसका बेसिक जो फंक्शन है उसका ये कंसिडर किया जाता है कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल इसको कंसिडर किया जाता है। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला मसल आ जाता है सेमीस्पाइनलिस जो है थोरैसिक मसल। अब सेमीस्पाइनलिस जो है पहले ऊपर हमने सर्वाइकल पढ़ा था, अब यही सेमीस्पाइनलिस जब नीचे आएगा थोरैसिक रीजन की तरफ, यानी कि बेसिकली T12 तक आएगा, तो इसको सेमीस्पाइनलिस थोरैसिक मसल कहेंगे। और सेमीस्पाइनलिस थोरैसिक मसल जो है इसकी बेसिक जो है ये एक तो ये एक्सटेंशन फ्लेक्शन में हेल्प आउट करेगा, और दूसरा क्या करेगा, रोटेशन में हेल्प आउट करेगा। किस चीज को रोटेशन फ्लेक्शन एक्सटेंड करेगा, बेसिकली आपका जो एरिया है थोरैसिक एरिया है, यानी कि जो चेस्ट का एरिया, इसमें एक्सटेंशन होगी, इसमें बेसिकली फ्लेक्शन होगी, इसमें एक्सटेंशन होगी, इसमें रोटेशन होगी। तो ये जो मूवमेंट है
ये बेसिकली सेमीस्पाइनलिस थोरैसिक मसल की वजह से आएगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो इस साइड पे आखिरी मसल आता है उसको मल्टीफिडस मसल कहा जाता है। और बेसिकली जो मल्टीफिडस मसल है ये आपकी नेक से आता आता यहाँ ऊपर शॉर्ट होता है, ऊपर पतला ये मसल होता है और ये आस्ता आस्ता जब यहाँ कमर पे पहुंचता है तो ये डेवलप हो जाता है, ये थोड़ा सा चौड़ा सा मसल बन जाता है। और यहाँ पे मल्टीफिडस मसल जब कमर के एरिया में आता है तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। और बेसिक जो इसका मल्टीफिडस जो मसल है इसका बेसिक जो फंक्शन है ये हमारी लो बैक जो एरिया है, जो कमर का एरिया है, उसको स्ट्रेंथ देती है, उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प आउट करता है। अगर इन केस ये जो मल्टीफिडस मसल है ये अगर वीक हो जाएगा तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि इसके मसल के वीक होने की वजह से लो बैक पेन स्टार्ट हो जाएगी, जो कमर का दर्द स्टार्ट होता है, जो मस्कुलर पेन जैसे बेसिकली जो भी कमर का दर्द जो है अगर वो उसको हम वर्टिब्रा या मोरे का जो पेन है उससे अलावा अगर देखा जाए मस्कुलर पेन में कंसिडर किया जाए तो मस्कुलर पेन में जो मल्टीफिडस मसल है ये मेन मसल है जिसकी इन्वॉल्वमेंट होती है लो बैक पेन में। फिर उसके बाद आप आ जाए सप्लीनियस मसल। सप्लीनियस मसल की वजह से आ जाए सप्लीनियस कैपिटस मसल है। सप्लीनियस कैपिटस मसल जो है ये बेसिकली डेप्थ पार्ट में पाया जाता है, यानी कि जो डीपर पार्ट है नेक का, गर्दन का जो अंदरूनी पार्ट है वहां पर ये मसल पाया जाता है। और जो बेसिक इसकी जो अटैचमेंट है, इनिशियल अटैचमेंट इसकी कहाँ पे होगी, जो सी हमने पढ़ा था C7 जो 7वां मोरा है गर्दन का वहां पे इसकी अटैचमेंट होगी और वहां से नीचे ये आएगा थर्ड जो थोरैसिक मसल है, यानी कि बेसिकली T3 तक ये आएगा। और जो बेसिक फंक्शन इसका है ये क्या करेगा, नेक को फ्लेक्शन करेगा और रोटेट करने में हेल्प आउट करेगा। बेसिकली जो रोटेशन ऑफ योर नेक है वो बेसिकली जो है इसको सप्लीनियस कैपिटस मसल की वजह से आएगी। फिर उसके बाद अगला जो मसल है ये भी सर्वाइकल रीजन में है, यानी कि आपका जो गर्दन का एरिया है बेसिकली C7 तक का वहां तक है। और ये जो मसल है इसको हम इलियोकोस्टालिस सर्विसेज मसल कहते हैं और ये आपकी सर्वाइकल रीजन पे है। और बेसिक इसका जो फंक्शन है ये जो आपका बेसिकली सर्वाइकल रीजन है इसको इरेक्ट करने में हेल्प आउट करती है, यानी कि इसमें तनाव जो आता है उसमें हेल्प आउट करता है और बेसिकली जिस सर्वाइकल रीजन है उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलियोकोस्टालिस थोरैसिक मसल। अब जो इलियोकोस्टालिस ऊपर सर्वाइकल हमने पढ़ा था वो सर्वाइकल रीजन में था और इलियोकोस्टालिस जो है ये बेसिकली थोरैसिक जो है ये थोरैसिक रीजन में, यानी कि आपके जो बेसिकली चेस्ट रीजन के बैक साइड का एरिया जिसको हम T1 से T12 पढ़ा है ये उस एरिया में पाया जाता है। अब जो इलियोथोरैसिक मसल है कोस्टालिस वाला, इसका जो बेसिक फंक्शन है ये जो थोरैसिक जो एरिया है उसको स्टेबलाइज करेगा और उसकी एक्सटेंशन में हेल्प आउट करेगा। फिर उसके बाद अगला जो मसल हमारे पास आ जाता है उसको हम स्पाइनलिस थोरैसिक मसल कहते हैं। ये भी थोरैसिक रीजन में पाया जाता है स्पाइनलिस थोरैसिक मसल। और इसका जो बेसिक फंक्शन है ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दो। एक तो पहला फंक्शन ये है कि ये जो हमारी थोरैसिक स्पाइन है इसको हमने ऐसे बेंड किया, लेटरली हम बेंड हुए और फिर इसको हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसे हमने रोटेट किया अपनी कमर को, तो ये बेसिकली जो रोटेशन है वो किसकी वजह से आ रही है, स्पाइनलिस थोरैसिक मसल की वजह से आ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लास्ट मसल आता है लॉन्जिस्मस थोरैसिक मसल आता है। ये भी बेसिकली थोरैसिक रीजन के बिल्कुल एंड पे पाया जाता है और ये आपका जो T12 है जो बेसिकली 12वां जो वर्टिब्रा है थोरैसिक वर्टिब्रा वहां पर पाया जाता है। और ये भी क्या करता है, फ्लेक्शन और इरेक्शन में हेल्प आउट करता है, यानी कि जो तनाव है कमर का उसमें हेल्प आउट करता है और फ्लेक्स करने में उसको हेल्प आउट करता है। उसके बाद जो अगला मसल लास्ट वाला आता है उसको हम इलियोकोस्टालिस लंबूरम मसल कहते हैं। और इलियोकोस्टालिस लंबूरम मसल जो है ये बेसिकली आपकी जो लंबर साइड है यहाँ पर पाया जाता है। और जो बेसिक फंक्शन बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इरेक्टर स्पाइन मसल्स को कहा जाता है। और जो बेसिक फंक्शन है लंबूरम मसल का, ये क्या करता है, आपकी जो लो बैक एरिया है उसको फ्रीली ऑल यानी कि हर तरफ फ्रीली जो मूव करती है आपकी कमर, वो बेसिकली यानी कि आप फ्रंट की तरफ मूव हुए, बैक की तरफ मूव हुए, लेफ्ट राइट, ये जो मूवमेंट है सारी ये बेसिकली जो है आपकी इलियोकोस्टालिस लंबूरम मसल की वजह से है। इन शॉर्ट ब्रीफ लाइन में एक दफा फिर इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को इसका थोड़ा समझ आ जाए कि थोड़ा सा
ये एज कम्पेयर टू बाकी टॉपिक्स के थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, दैट्स वाई इसको दोबारा से एक दफा कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हमने जो पहला मसल यहाँ पे डिस्कस किया वो सेमीस्पाइनलिस कैपिटस मसल है। ये गर्दन के पास पाया जाता है, दोनों तरफ जो गर्दन के पाया जाता है, और इसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, नेक की एक्सटेंशन है और नेक की बेंडिंग है। सेकंड मसल हमारे पास आ गया लॉन्जिस्मस कैपिटस मसल आ गया। लॉन्जिस्मस कैपिटल मसल जो है ये गर्दन का सबसे बड़ा मसल कंसिडर किया जाता है, और बेसिकली ये क्या करता है, गर्दन को रोटेट करने में, नेक को रोटेट करने में हेल्प आउट करता है। लॉन्जिस्मस सर्विसेज मसल है, सर्विसेज मीन ये सर्वाइकल रीजन में बेसिकली होता है लॉन्जिस्मस मसल, और इसको एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल कंसिडर किया जाता है। बेसिकली ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करता है। उसके बाद सेमी स्पाइनलिस मसल जो थोरैसिक रीजन में पाया जाता है वो क्या करता है, फ्लेक्शन और रोटेशन जो है, यानी कि बेसिकली थोरैसिक स्पाइन की जो फ्लेक्शन है और जो रोटेशन है उसमें हेल्प आउट करेगा। लास्ट में फिर हमने इस साइड पे डिस्कस किया मल्टीफिडस मसल। मल्टीफिडस हमने डिस्कस किया, ऊपर गर्दन से लेकर कमर तक आता है, लेकिन ऊपर ये मसल शॉर्ट होता है, बिल्कुल पतला सा होता है, लेकिन जब ये कमर के एरिया में पहुंचता है तो ये क्या करता है, डेवलप हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। और बेसिकली जो मल्टीफिडस का बेसिक जो फंक्शन है कि ये आपकी जो लो बैक एरिया है उसको स्टेबलाइज करता है, और इस मसल में अगर वीकनेस आएगी तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम आएगा, लो बैक पेन उससे हो सकता है। फिर अगर इस साइड पे आ जाए तो इस साइड पे सबसे पहले हमारे पास जो मसल गर्दन के बिल्कुल डेप्थ पार्ट में या डीपर पार्ट में, जो बिल्कुल गर्दन का जो अंदरूनी एरिया है वहां पे जो मसल पाया जाता है, स्प्लिनियस कैपिटस मसल इसको कहते हैं। और ये बेसिकली इसकी लोकेशन जो है 7वें सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होती है और 3रे थोरैसिक वर्टिब्रा तक जाती है, और जो बेसिक फंक्शन इसका है ये नेक की फ्लेक्शन और रोटेशन में हेल्प आउट करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास अगला जो मसल आता है इलियोकोस्टालिस सर्विसेज मसल आता है, ये भी सर्वाइकल रीजन में पाया जाता है। और इलियोकोस्टालिस सर्विसेज मसल जो है ये बेसिकली आपकी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसको स्टेबिलिटी देता है और उसको इरेक्शन में हेल्प आउट करता है, बेसिकली उसके तनाव में हेल्प आउट करता है, इरेक्ट करता है उसको। फिर उसके बाद जो मसल आता है इलियोकोस्टालिस थोरैसिक मसल। इलियोकोस्टालिस थोरैसिक मसल थोरैसिक रीजन में पाया जाता है, और बेसिकली इसे क्या है, ये स्टेबलाइज करता है थोरैसिक रीजन को स्पाइन की, और उसकी एक्सटेंशन में हेल्प आउट करता है। उसके बाद स्पाइनलिस थोरैसिक मसल आ जाता है। स्पाइनलिस थोरैसिक मसल जैसे कि मैंने बताया इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक जो लेटरल मूवमेंट है आपकी बेसिकली कमर की वो हो गया, और इसके अलावा आपकी ये रोटेशनल मूवमेंट है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी जो मूवमेंट है ये बेसिकली स्पाइनलिस थोरैसिक मसल की वजह से आ रही है। उसके बाद सेकंड लास्ट जो मसल हमारे पास है लॉन्जिस्मस थोरैसिक मसल, ये भी थोरैसिक की जो T12 वर्टिब्रा है बेसिकली वहां पर इसका इख्तिताम होता है, और इसका जो बेसिक फंक्शन है ये भी इरेक्शन और फ्लेक्शन में हेल्प आउट करता है, यानी कि एक तो इरेक्ट करता है, बिल्कुल कमर को जैसे आप सीधा करते हैं थोरैसिक एरिया को ऐसे स्ट्रेट खड़े होते हैं तो वो बेसिकली उसमें ही हेल्प आउट करता है, और इसके अलावा फ्लेक्शन में हेल्प आउट करता है। फिर आखिरी जो मसल हमने यहाँ पे पढ़ा इलियोकोस्टालिस लंबूरम मसल। इलियम बेसिकली जो इलियम कोस्टालिस लंबूरम मसल जो है ये बेसिकली हमारे जो लंबर एरिया के ये साइड है वहां पर पाया जाता है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इरेक्टर मसल ऑफ स्पाइन, इसको लो बैक एरिया का एक इरेक्टर मसल बड़ा इंपॉर्टेंट मसल कंसिडर किया जाता है। और इस लंबूरम मसल की वजह से आपकी जितनी भी फ्री मूवमेंट है, बेसिकली जो कमर का एरिया जो चारों तरफ ऐसे फ्री मूव करता है, लेफ्ट राइट नीचे फ्लेक्शन एक्सटेंशन जितनी मूवमेंट है रोटेट करते हैं वो सारी जो है ना इस लंबूरम मसल की वजह से आ रही है। तो ये बेसिकली आज का जो टॉपिक था इसमें हमने लंबर स्पाइन जो है उसको हमने कंसिडर किया कि उसमें जो कौन कौन से मसल्स हैं, किस साइड पे लोकेट होते हैं और इनका फंक्शन क्या क्या है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।